So, ସମସ୍ତଙ୍କୁ a very good evening to each and everybody present over here. ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କାହା ବିଷୟରେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, we'll be discussing about the president of India. देखो, this topic is extremely important from the perspective of any competitive exam that you're going to appear. In fact, तुम्हारा जो जियोलॉजिस्ट CGSE कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन रे गोटे पेपर थाए GS from that perspective also it are both important. So without wasting any time, let's learn about president of India. Okay, आमे प्रथम देखिबा कि कौन कौन आमे कवर करिबा, what are the things that we are going to cover in this video. Okay, प्रथम आमे जानिचे करेंटली आमर प्रेसिडेंट किए? द्रौपदी मुर्मू, राइट? यस। तो आमे एग्जैक्टली देखिबा कि प्रेसिडेंट रो डेफिनेशन कौन, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रेसिडेंट विषय रे कौन लिखाई छी, हु एग्जैक्टली is president. The first question we will be answering is who is president. ना तो हमें जानी चाहिए, but तारो constitution रे ता विषय रे कौन लिखा है that we will try and understand. A brief introduction, ठीक है। Then next दिन सहला president रो election विषय रे we will try to understand. इलेक्शन रे पुनी बहुत डिफरेंट जिनस अच्छी, माने कौन? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैला, माने जने जदि प्रेसिडेंट हबा को चाहूची, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट ही और शी नीड्स टू फुलफिल हैला। ओके, तापरे जने यदि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हबा को चाहूची, व्हाट आर द एक्शंस और प्रोसीजर ही हैज टू फॉलो। जमती तुम्हें आईएएस ऑफिसर हबा को हेले तुमको सिविल सर्विसेस रा एग्जामिनेशन दबा को पड़ियो, सेमती जने यदि प्रेसिडेंट हबा को चाहूची ताको व्हिच प्रोसीजर ही हैज टू गो थ्रू। सेकंड, नाउ थर्ड पार्ट, इलेक्शन प्रोसेस केमिति आमर भारत रे आमर प्रेसिडेंट को केमिति इलेक्ट करा जाए। आउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल कॉलेज गोटे बहुत ही माने फैंसी टर्म, किंतु एतिकी सिंपल मन रख कि भाई प्रेसिडेंट को किए इलेक्ट करते आमको से जानवर अच्छी, हु आर द पीपल that participate in presidential elections. Okay, so आमे कौन कौन कवर करिवा? प्रेसिडेंट किए, who is he, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रेसिडेंट जने हबा चाहूची तो से कौन कौन क्राइटेरिया फुलफिल करिया दरकार, प्रोसीजर्स, व्हाट प्रोसीजर ही हैज टू फॉलो, कौन करिया दरकार सो दैट ही बिकम्स प्रेसिडेंट, लास्टली इलेक्शन प्रोसेस एंड इलेक्टोरल कॉलेज. Okay, now let us start off with the first question, that is who is the president. Well, देखो प्रेसिडेंट कौन? आमर हेड ऑफ द स्टेट, तांको नॉमिनल हेड मध्य कहा जाए। कहीं कहा जाए मैं कहिबी। आउ प्रेसिडेंट आमर प्रथम नागरिक भारतर, first citizen of India. He is the first citizen of India. Okay, so president is known as the head of the state. He is the nominal head, and he is the first citizen of India, and he is the supreme commander of armed forces.
माने आम जो आर्म्ड फोर्सेस अच्छी जतिक फोर्सेस जहाँ पाखे वेपन्स अच्छी तांकू किए कमांड करे प्रेसिडेंट ओके इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस माने हमर जल स्थल वायु एयरफोर्स हो गला नेवी हो गला आउ मिलिटरी हो गला all these armed forces they are commanded or their ultimate supreme commander is the president of India. Always remember that. Okay, and head of the state, just mug it up. Nominal head, we will look into it. First citizen of India, the most important citizen of India is of course the president, and nominal head आम जाचे कि छोट बेलू तुम गोटे कथा शुणिक आसो कि प्रेसिडेंट गोटे रबर स्टाम्प माने कौन कि से खाली गोटे ना को हेड तार असलियत रे किसी भी पावर्स न थाए ही डज नॉट हैव एनी पावर्स इन रियलिटी ही इज द हेड ऑफ द स्टेट जस्ट फॉर द नेम सेक खाली ना पाए ही से गोटे हेड बोली ताको आमे कहू जस्ट फॉर द नेम सेक ओके कौन पाए हम देखा देख गोटे अच्छी आमर आर्टिकल 74 है आर्टिकल 74 रे माने प्रति आर्टिकल किसी किसी जिनस लिखाई थाए और आर्टिकल 74 रे भी सेमती किसी प्रेसिडेंट विषय रे ही लिखाई ओके 42nd अमेंडमेंट 1976 कौन करागला कि भाई एटा डिसाइड करागला थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 74th आर्टिकल ले किसी नुआ रूल लागू है कौन लागू है कि प्रेसिडेंट has to follow the aid and advice of council of minister or to be more technical or technical term रे हम देखिबा कि the aid and advice of the president or sorry the aid and advice of the council of minister headed by the prime minister is binding on the president. Let me write down that sentence for more clarity. The aid and advice of council of minister headed by the prime minister is binding on the president माने कौन भाई सिंपल जिनस जहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहब प्रेसिडेंट ताकू मानिबा को बाध्य इनफैक्ट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से प्रेसिडेंट ता जो निश्वास प्रश्वास नौची सेटा भी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आदेश रे ही करुची माने गोटे मेटाफोरिकली आई एम स्पीकिंग सो विदाउट द advice and aid of council of minister president cannot take a single decision cannot move a single inch always remember this okay बट किसी एक्सेप्शन थाए जो कि प्रेसिडेंट तार निज पावर भी एक्सरसाइज करिया पड़े बट इट इज़ वेरी वेरी रेयर ओके से केस भी आम देखा तो यहाँ तुम होगा 74 आर्टिकल विषय देन नेक्स्ट जिनस है कौन कि भाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कौन है 1978 रे होता ए भाई कौन है कि आमे जानिचे गोटे बिल को लॉ होगापाई ताकू दीटा हाउस प्लस प्रेसिडेंट रो एसेंट दरकार सो इफ ए बिल हैज टू बिकम अ लॉ देन इट हैज टू बी accepted by both the houses, it has to be passed by both the houses, and finally president has to give assent to it. लोक सभा रहीगला राज्यसभा रहीगला प्रेसिडेंट रहीगला ये तीन जनकर मंजूरी हेले ही गोटे बिल टा लॉ हो पार ये मन रख ठीक अच्छे सपोज लोकसभा गोटे बिल पास कला कि झील मानकर लीगल मैरेज एजटा 18 ରୁ 21 कर दियो लोकसभा से पास हो गला लोकसभा सम्मति देदेला राज्यसभा से पास हो गला राज्यसभा ऑल्सो गेव इट्स अग्रीमेंट नाउ द प्रेसिडेंट पाखु से बिल पहुँचला
प्रेसिडेंट किसी कारण से जो प्रोविजनटा कि ये जो बिलटा भल लगे आउ सी चाहिला कि किसी गोटे चेंज हो है तो एबे प्रेसिडेंट चाहिए मैक्स टू मैक्स तार डिसअप्रूवल जनइबा सी गोटे थर खाली पार्लियामेंट को बिलटा पछकू फेरी पार कि भाई प्लीज राज्यसभा कि लोकसभा कि पार्लियामेंट तुम्हें टिके देखिदि मत यहाँ कहीं ठीक लगुनि तुम्हें टिके दयाकर टिके बदल दियो जो बिलटा को मैं सी एमती कहीपर ओके सो प्लीज लोकसभा राज्यसभा आई फील दैट इट इज नॉट करेक्ट एंड देयर आर सम चेंजेस व्हिच आई थिंक should be made, so please consider my opinion. Now even after this, if Lok Sabha and Rajya Sabha are not satisfied, if Lok Sabha and Rajya Sabha do not want any changes to be made, they can still send the bill to the president as it is. माने प्रेसिडेंट जहाँ सब कही ताकू लोकसभा पुणी जदि न मानिकी भी पठेदेले प्रेसिडेंट को पाखु प्रेसिडेंट एबे मानिबाकू बाध्य माने सारा कथा मोटे कौन कह चेष्टा करुच्ची कि जदि प्रेसिडेंट को गोटे बिल किसी जिनस भल लगुनि सी पार्लियामेंट को मात्र थरे रिकनसिडरेशन से बिलटा को पठे पार आउे भी जदि लोकसभा राज्यसभा ता कथा शुणिले जमती हेले भी प्रेसिडेंट को बिलटा को पास करिया को ही पड़िब ओके बुझीगला माने ए केस रे कोन होची प्रेसिडेंट किसी कथार वैल्यू ना लोकसभा राज्यसभा गोटे बिल को पास करदेले माने सेटा लॉ हवा थय प्रेसिडेंट हैज टू गिव इट्स हिज एग्रीमेंट एट मैक्स से केवल पछ को फेरे पार ओके आ सहित गोटे रिलेटेड गोटे जिनस भी अच्छी जहाँ मैं वेटो बोली कहे सस्पेंसिव वेटो वी विल लर्न अबाउट दैट डोंट वरी बट फॉर नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट कैन सेंड अ बिल back for reconsideration only once that was inserted through 44th constitutional amendment act and ए दीटा कारण रु ही प्रेसिडेंट को आम नॉमिनल हेड बोली कहू ना को हेड ओके तो आम प्रेसिडेंट किए हु एग्जैक्टली इज प्रेसिडेंट दैट थिंग वी हैव कवर्ड हेड ऑफ द स्टेट nominal head, supreme commander of armed forces, first citizen of India. Now, let us jump into the topic of elections of India. President ro election विषय चला आम टिके पढ़ा को आरंभ करदेबा इलेक्शन हो गला फर्स्ट ओके जदि तुमको धर प्रेसिडेंट हबार अच्छी तुमको कौन करा पड़ो सपोज तुम 20 वर्ष ताले भाई प्रथम जिनस है तुमको 15 वर्ष वेट करा पड़ो यू हैव टू वेट फॉर 15 years because now you are 20 years right so to become a president the first requirement is the first eligibility criteria is you should be at least 35 years of age 35 वर्ष ना पर्यंत तुम प्रेसिडेंट हाँपाई स्वप्न कौन स्वप्न भी देखिपर द्वितीय सिटीजन यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया तृतीय you should be eligible to be a लोकसभा मेंबर लोकसभा मेंबर पाई सबू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू नीड टू फुलफिल माने जो कि तुम you have to be mentally stable you cannot be bankrupt and you should not have any criminal records okay all those things are there so eligibility criteria तो भाई तुम्हें 35 वर्ष रही जाओ इंडिया सिटीजन हो जाओ पागल न हुआ आ बैंकरप्ट न हुआ है आउ तुम्हें बस एति कथा है 35 वर्ष सिटीजन ऑफ इंडिया पागल दिवालिया ही नथियो खत्म बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सपोज नाउ यू हैव टू बिकम द प्रेसिडेंट यू हैव बिकम 35 years तुम हो जाए सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम फुलफिल कर दौच तुमको एबे प्रेसिडेंट हबार यू हैव टू बी द प्रेसिडेंट सो व्हाट विल यू डू कौन करा पड़ो तुमको गोटे नॉमिनेशन पेपर फाइल करा पड़ो okay you have to file a
nomination paper. Then you have to do 15K deposit. 15,000 डिपोजिट तुमको कराया पड़ो. तृतीय, you need 50 proposers and 50 seconders. माने एदेबे भाभी चलो तुम 100 जन सपोर्टर दरकार. नॉमिनेशन पेपर फाइल कल, 15,000 डिपोजिट कल, 50 तुम पछे प्रपोजर थी दरकार, 50 सेकंडर थी दरकार. ओके, एटा दिस इज योर, these are the actions you need to undertake if you have to become the president of India. Now एटा हेगला. Then let's talk about the electoral college first. जेमती कि गोटे MLA रो इलेक्टोरल कॉलेज है, गोटे कन्स्टिट्यूएंसी रे जितिक लोक थे से MLA रो इलेक्टोरल कॉलेज से MLA पाई भोट करेंगे. सेमती गोटे प्रेसिडेंट पाई, who votes for the president, who chooses the president, who has the responsibility to elect the president, right? simple जिनस पूरा किए करे. अच्छा, ता पूर्व गोटे कथा मन रखी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन. Okay, and this entire election process is called proportional representation. lekha proportional representation by single transferable vote. माने मु कहिबी बट एते कि मन रख, प्रेसिडेंट रो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए माने कौन, आमे किसी लोक को इलेक्ट करो जमती कि MLA हो जाओ कि MP हो जाओ, से माने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती ऑन आवर बिहाफ. सो इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन. आमे MLA MP को इलेक्ट कलु, से माने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कले. बहुत सुंदर, ठीक अच्छे. चलो आगू बढ़िया. तो इलेक्टोरल कॉलेज एटा बहुत थर क्वेश्चन आसे, एटा फेवरेट क्वेश्चन. इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट रखिए. फर्स्ट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जितक सब इलेक्टेड मेंबर्स अच्छा से माने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे. द्वितीय, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. इलेक्टेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. नाउ नेक्स्ट जिनस है, नॉर्मली दिल्ली हो जाओ, पुडुचेरी हो जाओ, से मान दिजन कौन, यूनियन टेरिटोरी. यूनियन टेरिटोरी रो स्टेट लेजिस्लेटिव न थाए, से तार MLA भी न थाए, तो प्रेसिडेंट को कि इलेक्ट भी करते नहीं यूनियन टेरिटोरीज रो. किंतु दिल्ली एंड पुडुचेरी आर टू एक्सेप्शनल केसेस. जो केस रे कि तुम स्टेट लेजिस्लेटिव अच्छी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी माने MLA भी अच्छी. ओके, सो मन रहा. सो the MLAs from the state legislative assemblies of Delhi and Pondicherry, they also participate in the presidential election. Last point, but the most important one, is को भी nominated member रो किछि भी ताकत नहीं प्रेसिडेंट रो इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करिया को. ओके, no nominated member can ever participate in the elections of the president. Always remember this. ओके, ठीक अच्छे. कहीं मुझे गोटे पर्सनाली भावी कि देख, आमे कहूँ कि प्रेसिडेंटा गोटे इनडायरेक्ट इलेक्शन, माने लोक मैंने MLA को इलेक्ट कले, MLA प्रेसिडेंट को इलेक्ट कले, लोक मैंने MP को इलेक्ट कले, MP प्रेसिडेंट को इलेक्ट कले. सपोज तुम जो नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट को धर इलेक्ट कर, इफ योर नॉमिनेटेड मेंबर बिगिन्स टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, ताहले कौन हम कि
नॉमिनेटेड मान तो सी इलेक्टेड नुह लोक मैंने इलेक्ट करती ताने जिते बेसी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे सेते लोक मानकर पावर कम पीपल मानकर पावर कम है कना देख जदि लोक माने एमएलए को इलेक्ट कले एमएलए प्रेसिडेंट को इलेक्ट कला तमें एथर कौन इनडायरेक्टली पीपल आर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट किंतु जो नॉमिनेटेड मेंबर हो जाती ना आ लोक मैंने तो नॉमिनेट करना लोक माने एमएलए हो कि एमपी हो दोज एमपी एंड एमएलएज आर दे आर नॉट नॉमिनेटेड बाय पीपल तो नॉमिनेशन तो प्रेसिडेंट करे ताने एठी से लोक मान पावर टे कमी जाऊँ है because of this your I think there are no nominated members in the electoral college of the president and one more thing state legislative council जदियो बा किसी states रो थिबो तारो ना nominated ना elected को भी members माने केबे भी तुम्हारा participate करि परिबनी elections रे very nice very clear okay it is electoral college विषय then the most important thing is we will try to understand a president को election केमती हुए what is the process of election of the president now let's say that we have one is Ram one is Krishna one is Shiva one is Brahma so these are the four presidential candidates दे से कहले कि भाई मोर दम अच्छे प्रेसिडेंट हो पारि टोटाल धर भोट तुम्हें मान्य 10,000 अच्छी है जन को मिलला 4,000 जन को मिलला 3,000 जन को मिलला 2,000 और जन को मिलला 1,000 तो ये केस रे जो भी गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भाविबो जे कि पॉलिटिक्स रे आइडिया नथिबो सी ए रामटा जीति जो बोली बट दैट इज नॉट द केस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे जे पर्यंत गोटे कैंडिडेट 50% टू अधिक भोट गार्नर करनी पाइनी से पर्यंत ताको हम प्रेसिडेंट बोली कहि पारि माने ए केस रे आमे राम को प्रेसिडेंट बोली कहि परिबा नाही ओके सो इन दिस केस nobody has really won the election till now ता पूर्व आ गोटे प्रेफरेंस विषय में तुमको कही दूची प्रेफरेंस माने कौन चार्टा कैंडिडेट अच्छा माने जेतिक भी मेंबर वोट कर फर्स्ट प्रेफरेंस तो दबार अच्छे फर्स्ट प्रेफरेंस से मैंने दवा बाध्य 4,000 लोक राम को फर्स्ट प्रेफरेंस थे 3,000 लोक कृष्ण को फर्स्ट प्रेफरेंस थे 2,000 लोक शिवा को फर्स्ट प्रेफरेंस थे और ब्रह्मा को 1,000 लोक फर्स्ट प्रेफरेंस थे किंतु ता सहित सेकेंड थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस भी दवा पड़ो ओके दे ऑल्सो हैव टू गिव सेकेंड थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस ता द्वारा कौन हम देखा देख एबे ए केस रे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट कला परे आमे देखिले कि कई भी जीतुनी 50% रु अधिक कहार भी वोट होनी है मन रखिबो कि 50% रु अधिक वोट हेले ही जने प्रेसिडेंट हो पारिबो आउ ए केस रे 50% रु अधिक कहार भी वोट होनी यू कैन क्लियरली सी दैट नोबडी इज गेटिंग मोर देन 50% vote that is more than 5,000 votes right no in this case what will happen Brahma will be eliminated and the second preference of these 1,000 people will be taken into account 8,000 लोकंकर second preference एबे गणा जीवो सपोज माने कर 500 वोट आसीबो एबे आ पाखु 250 वोट कृष्ण पाखु पळा आसीबो 250 वोट शिव पाखु पळा आसीबो राम पाखे तुमरो 500 वोट अच्छी कृष्ण पाखे 250 वोट माने ए जो 1,000 रु आ 250 शिव पाखे माने टोटल देखिले 4,500 4,500 votes are with Ram 3,250 votes are with Krishna and 2,250 votes are with Shiva okay hela तो 4,500 3,250 2,250 this is Ram this is Krishna this is Shiva now
एबे भी कहा पाखे 50% अधिक वोट ना 5000 अधिक वोट ना सो व्हाट विल हैपन दिस कैंडिडेट विल बी एलिमिनेटेड नाउ ए 250 कर थर्ड प्रेफरेंस आउ ए 2000 कर सेकेंड प्रेफरेंस विल बी टेकन इनटू अकाउंट ओके जदि एबे भाव कि 2000 भोट कृष्ण को मिलगला 250 राम को मिलगला तो एटा केते 4750 एटा केते 5250 ता माने एठी तुम क्लियरली देखि पारछ कि कृष्ण पाखरे 5000 रु अधिक वोट हे गला कृष्ण हैज ऑब्टेन्ड मोर देन 5000 votes 5250 that means clearly krishna has become the president krishna has won the presidential elections and become the president of india okay very nice so this was the process this is known as proportional representation by single transferable vote okay वेरी नाइस ये हो गया तो हमने इलेक्शन के बारे में भी पढ़ लिया है इलेक्शन के बारे में और थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें भी है वो भी हम करेंगे सेटा भी हमें करिबा किंतु ता पूर्व आम दीटा आउ जिनस भी विल one important thing I was talking about is the suspensive veto suspensive veto he gala absolute veto he gala hello prathama so we just discussed in the past that this power is enjoyed by the president of india and the president of india enjoys the power of suspensive veto seta ame dekhiba kono okay so before understanding the suspensive veto and absolute veto let us try to understand ए जो veto रो अर्थ कौन suppose तुम्हारा ग्रुप रे 5 people are there 4 people are saying that let's go to Jammu and Kashmir for this holiday and one person is saying let's go to Puri this holiday right now if this one person has the ability to reject the decision of all the other 4 persons then he is exercising veto power or he has the veto power jete bele गोटे जन जेते जणे जनक पाखरे अन्य समस्तंकर मत को खारिज करिवार शक्ति थाए मना करिवार शक्ति थाए that is called veto power the ability of one entity to reject the decision of all the other entities is called veto power माने ये जणे चाहे कि चारि जनकर डिसीजन को ओवर पावर करदेला मना करदेला so who won here so this person exercised veto power आको मैं veto बोली कहूचे ठीक अच्छे किंतु इंडिया रो veto टिके अलगा इंडिया रो जो प्रेसिडेंट पाखे जो veto power अछि that is a little different that is a little weaker it is called suspensive veto for a reason कौन what is the reason कि max to max if the president does not like a bill then he can delay the passage of the bill से bill रो passage टाको बस टिके डेरी करे देबा बिल 10 दिन रे पास हे थांता प्रेसिडेंट चाहिले सेटा 2 मास रे पास हे जो आउ किछि बेसी मना करि परिबनी सस्पेंसिव वेटो सिट में सो यू आर सस्पेंडिंग समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन डेरी कर दो तुम ठीक अच्छे तो दिस इज सस्पेंसिव वेटो एंड इट इज मेंशन इन आर्टिकल 111 सब मन रखिबो ए जो वेटो शब्दटा कॉन्स्टिट्यूशन रे कोठी मेंशन हेनी
किंतु खाली एतिकी लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक फॉर रिकनसिडरेशन एटा ही आम सस्पेंसिव वेटो बोली कहूचे ओके एटा तो हो गला प्रेसिडेंट पाखे आम सस्पेंसिव वेटो आम जानीगले प्रेसिडेंट खाली गोटे बिल को डेरी कर भाई तार किसी पावर ही ना से माने रिजेक्ट कर एब्सोल्यूट वेटो एक्सरसाइज कर ठीक अच्छे किंतु however there are some exceptional conditions जिते बेले प्रेसिडेंट तार वेटो पावर यूज करि परियो माने एब्सोल्यूट वेटो यूज करि परियो केते बेले सपोज प्राइवेट मेंबर बिल मु कोन कहि बट बस यू जस्ट मग इट अप in case of private members bill president can use absolute veto number 1 number 2 jodi he can use absolute veto if the new cabinet advises him to reject a bill passed by the earlier cabinet माने गोटे एग्जांपल दूचे सपोज एबे तुमर मोदी पावर रे अछि मोदीर कैबिनेट गोटे कहले कि मैरिज एज 18 रु 21 हो जावा कथा 18 रु 21 ठीक प्रेसिडेंट ताको सस्पेंसिव वेटो कर दे डेरी करतला कि भाई तुम रिकन्सिडर कर टिके टाइम नहीं कि भाव टिके चेंज कर हला तो एति भितर मोदीर टर्म खत्म हो गला माने मोदीर कैबिनेट डिसॉल्व हो गला और राहुल गांधी पावर को आसीगला मोदी मरीगला ठीक अच्छे मोदी आउ पावर ना ए बिलटा प्रेसिडेंट पाखे रहा प्रेसिडेंट रिकनसिडरेशन पठे लोकसभा राज्यसभा को एटा पास है नहीं पर्यंत मोदी पास करदेला प्रेसिडेंट पाखे अच्छी प्रेसिडेंट रिकनसिडरेशन पठेला है किंतु यही सब प्रोसेस हवा भितर मोदी गवर्नमेंटा इट लॉस्ट पावर तार टर्म खत्म होगा 5 वर्षर जो टेन्योर खत्म हो गला आउ राहुल गांधी ता भितर पावर को पड़े आसला राहुल गांधी जो पावर आसला ता पाखे प्रेसिडेंट का पठाला लोकसभा प्रेसिडेंट बिलटा को लोकसभा और राज्यसभा रिकनसिडरेशन में पठाइला एबे राहुल गांधी जो कैबिनेट अच्छी इट विल डिसाइड इफ द ओल्ड बिल वुड बी पास्ड और नॉट जदि राहुल गांधी भी कह मोदी आम बिल्कुल मोदी आमको भल लगे ना तार कार्यकलाप तो सी जो बिल पास कर आई डोंट लाइक इट जस्ट रिजेक्ट द बिल यार आई डोंट वांट द मैरिज एज ऑफ फॉर फीमेल्स टू बी रेज्ड टू 21 जस्ट रिजेक्ट द ब्लडी बिल if the Rahul Gandhi government says like this then the president gets the power to reject the bill देखो पूर्व केबे भी प्रेसिडेंट बिल रिजेक्ट करि पार नथला किंतु ए केस रे प्रेसिडेंट रिजेक्ट करि पारछ कंडीशन कोन कि जो कैबिनेट बिलटा पास करथिला से पावर रु हटि जाइछि नुआ कैबिनेट आसला नुआ कैबिनेट एडवाइस करछि कि पूर्व बिलटा तुमे पास कर नाही ओके This is your absolute veto. The absolute veto of the president can be used in case of private members bill and if the new cabinet advises the president to reject the bill passed by the previous cabinet. Okay, clear. Now let us look at some important articles. Already we have mentioned 2 articles. One is 111, that is the veto power. 74, aid and advice of the president of the council of ministers is binding on the president. एटा तुम जानी गले. 78 is also important. 78 कौन कहूची 78 कहूची कि the president can require the prime minister to furnish information
on administrative and executive actions taken by the government. Government जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव की एग्जीक्यूटिव एक्शन क्यारी आउट करिवो से विषय इनफॉरमेशन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ठारू मागी पारि माने प्राइम प्रेसिडेंट जहाँ भी इनफॉरमेशन प्राइम मिनिस्टर ठारू मागिबो प्राइम मिनिस्टर ताको दबाको ही पड़ियो ओके किसी भी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन प्राइम मिनिस्टर नेला तो प्राइम मिनिस्टर से सब काम विषय प्रेसिडेंट को कहया पड़ियो आर्टिकल 78 रे लिखा है क्लियर आर्टिकल 53 रे लिखा है आम ऑलरेडी पढ़ी सारी द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड he has the power to declare or war on any country or conclude a war with any country माने से चाहिए प्रथमतः से सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस द्वितीय है को भी कंट्री उपरे से वार आरंभ करि परिबो कि को भी कंट्री से वार शेष करि परिबो दिस इज आर्टिकल 53 in the next class we will learn about the ordinance making power about the pardoning power of the president okay these things we will learn but for now I think this is more than enough just please revise thoroughly and keep revising that's my advice to you